Good afternoon, class. Good afternoon to all of you. Today we are going to start a new topic. Uh, that is, let me share my screen first. Good afternoon once again to all of you. Today we are going to start a new topic, that is the incidence of tax. Before moving further, we must revise some concept which I have already covered in the previous lecture. In the previous lecture, I have already discussed what are the basic condition, what are the basic condition to be fulfilled for becoming the of resident of India, right? So determination of residential status of an individual, section 6 of section 1, basic conditions बेटा fulfill होना चाहिए. पहली basic condition, individual shall be represented in India if he satisfy any of the following two condition. ठीक है. पहली कंडीशन क्या है? इफ द इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी कि जो मेरा प्रीवियस ईयर है 2021, उसका प्रीवियस ईयर में कम से कम वो 182 दिन या फिर उससे ज्यादा रहा हो, राइट. दूसरी कंडीशन क्या है? इफ ही स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 days और मोर ड्यूरिंग फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देन द इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड रेसिडेंट इन इंडिया, राइट. बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द एक्सेप्शंस फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग पर्सन. द फर्स्ट कंडीशन mentioned above only shall apply to determine his residential status: individual Indian citizen living in India for employment outside India, right? B, Indian citizen being a crew member of an Indian ship living in India. Third, individual Indian citizen or person of Indian origin visiting India, right? तो ये एक्सेप्शन केसेस हमने डिस्कस कर लिया. उसके बाद बेटा जब बेसिक कंडीशन कोई एक इंडिविजुअल फुलफिल कर लेता है, बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लेता है, दोनों या एक उसमें से एक भी, तो दैट इंडिविजुअल बिकम द रेसिडेंट इन इंडिया, राइट. उसके बाद हम चेक करते हैं कि वो इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. अगर वो एडिशनल दो कंडीशन फुलफिल कर देता है, हम रिपीटिंग वन सेकेंड, अगर वो एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर देता है, देन द इंडिविजुअल बिकम द रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट. एज सिंपल एज दैट. तो पहली कंडीशन क्या है? कहता है he has been resident in India in at least 2 years out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year. यानी कि जो प्रीवियस ईयर है 2021, उसके पिछले 10 सालों में दो सालों में वो रेसिडेंट रहा हो. सेकेंड कंडीशन क्या है? he has been in India for 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year. What does it mean? कि जो प्रीवियस ईयर है यानी कि 2021, उसके पिछले 7 सालों में कम से कम 700 दिन या उससे ज्यादा रहा हो इंडिया के अंदर. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देता है तो देन इंडिविजुअल बिकम द रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. अगर ये इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई, देन द इंडिविजुअल विल बी resident and not ordinary resident. As simple as that. I hope it is clear. So these
This topic I have already covered in the previous lecture. I was just revising you, right? Now, in today we are going to discuss about the incidence of tax. Incidence of tax. Yeah. Incidence of tax. These are some. First of all, I would explain what is the meaning of receipt of income. Income received in India. कहता है income received in India is taxable in all cases irrespective of residential status of an SSC. Right. Next is your what is income deemed to accrue or arise in India? What does it mean? कि what is income deemed to accrue or arise in India? कहता है in some cases income is deemed to accrue or arise in India under Section 9, even though it may actually accrue or arise outside India. Section 9. Section 9 applies to all SSC irrespective of their residential status and place of business. The categories of income which are deemed to accrue or arise in India are as under income from business connection. The following conditions should be satisfied. First condition is your the taxpayer has a business connection in India, right? Second, the virtue of business connection in India, income actually arises is outside India. If the above condition are satisfied, income which arises outside India because of business connection in India is deemed to accrue or arise in India, right? A few instances of business connection. Some illustrative instance of a non-resident having business connection in India. First, maintaining a branch office in India for the purchase or sale of goods or transacting other business. B, appointing an agent in India for the systematic and regular purchase of raw material or other commodities or for the sale of non-resident goods or other business purpose. C, erecting a factory in India where the raw produce purchased locally is worked into the form suitable for export abroad. D. Forming a local subsidiary company to sell the product of a non-resident parent company. E. Having financial association between a resident and non-resident company. Right. Now, this is the scope of total income. Uh, Scope of total income, that is the how you will compute the total income of right. This is the format, or you can say this is the format computation of total income. पहला हम तीनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे. तीनों केसेस को रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकंड केस रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, थर्ड केस है आपका नॉन रेसिडेंट, राइट. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया. अगर इंडिविजुअल की इनकम इंडिया में ही कमाई उस बंदे ने और इंडिया में ही मिली, ठीक है, इंडिया में ही कमाई और इंडिया ने सपोज मिस्टर एक्स ने इंडिया में 10 लाख रुपए कमाए बिजनेस से और 10 लाख रुपए कमाने के बाद इंडिया में ही उसको रिसीव हुआ, तो दैट विल बी टैक्सेबल इन ऑल थ्री केसेस. ऑल थ्री केसेस. पहला केस कौन सा? रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. सेकंड रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. थर्ड नॉन रेसिडेंट. तो income accrued and received in India, it will be taxable in all three cases, right? Second point बेटा, income accrued in India but received outside India. What does it mean? कि इंडिया में कमाई, किसी बंदे ने इंडिया में कमाई और बाहर इंडिया से बाहर रिसीव की,
So that is also taxable in all three cases. It will be taxable it will be taxable in a resident, ordinary resident, resident and not ordinary resident, and it also be taxable in non-resident also. Right now, third point, इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया, यानी कि बाहर कमाई, इंडिया से बाहर कमाई, बट इंडिया में रिसीव्ड हुई, इंडिया में रिसीव हुई, सो इट विल आल्सो बी टैक्सेबल इन ऑल थ्री केसेस, गाइस, राइट? आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ. फोर्थ, ठीक है बेटा, फोर्थ कहता है इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, यानी कि व्हाट डज इट मीन कि इंडिया से बाहर कमाई और बाहर ही रिसीव हुई, बाहर ही कमाई और बाहर ही रिसीव किया उस बंदे ने. मान लो मिस्टर वाई है, उसने बाहर कोई इनकम कमाई और बाहर ही उसने रिसीव कर ली. अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो इट विल बी टैक्सेबल इन हिज हैंड. अगर वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो टैक्सेबल, ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी. अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन हिज हैंड, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई ने बाहर कमाई, मान लो 10 लाख रुपए कमाए और बाहर ही उसने वो पैसा उसको रिसीव हुआ. अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो तब तो वो टैक्सेबल होगा उसके हाथ में. अगर वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो तब टैक्सेबल नहीं होगा. अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो तब भी टैक्सेबल नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट, राइट? नाउ फिफ्थ, profit from business outside India. What does it mean? Profit from business outside India but control from India or set up in India. What does it mean? प्रॉफिट हुआ यानी कि उसको इनकम हुई बिजनेस आउटसाइड इंडिया. कोई बिजनेस है, मान लो अमेरिका या चाइना में बिजनेस सेटअप है, मतलब प्रॉफिट हुआ उसको, बिजनेस आउटसाइड यानी कि चाइना में है सपोज करो, बट कंट्रोल जो है इसका मैनेजमेंट क्या है, इंडिया से किया जाता है, इंडिया से मैनेजमेंट किया जाता है. तो कहता है कि अगर ऐसा प्रॉफिट हुआ या कहीं ऐसी इनकम हुई तो इट विल, अगर वो बंदा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, इट विल बी टैक्सेबल इन हिज हैंड. अगर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो तब भी टैक्सेबल है उसके हाथ में. अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा तो तब उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, राइट बेटा? दिस इज लॉ, राइट? यू कैन नॉट चेंज, राइट? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन दिस पॉइंट. कहता है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया, बाहर उसका बिजनेस सेटअप है, उसको मान लो कि 25 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, लेकिन कंट्रोल जो है इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, यानी कि कंट्रोल मतलब उसका मैनेजमेंट है, उसका डिसीजंस इंडिया से लिए जा रहे हैं, ठीक है. तो अगर वो बंदा रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उस प्रॉफिट पे, उस इनकम पे टैक्सेबल, वो प्रॉफिट इनकम टैक्सेबल हो जाएगी. अगर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी टैक्सेबल हो जाएगी. अगर वो नॉन रेसिडेंट है तब टैक्सेबल नहीं होगी, राइट? सिक्स पॉइंट है बेटा, सिक्स पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Past foreign untaxed income remitted in India during the previous year. What does that mean, guys? Past foreign untaxed income इंडिया भेजी गई है प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 में, तो ऐसी इनकम पे अगर वो रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी टैक्सेबल नहीं है. रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है बंदा तो तब भी टैक्सेबल नहीं है. नॉन रेसिडेंट है तो तब भी टैक्सेबल नहीं होगी, राइट? तो ये 6 पॉइंट्स आप बेटा ध्यान रखना, ठीक है. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन.
क्वेश्चन है बेटा, कहता है मिस सोफिया सबमिटेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, यानी कि जो प्रीवियस ईयर है मिस्टर सोफिया सबमिटेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 2021 to be the total income for the assessment year 21-22 इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, उसकी टोटल इनकम कहता है कंप्यूट करना पड़ेगी मिस सोफिया की। यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, हर रेसिडेंशियल स्टेटस, अगर पहला क्या है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, केस नंबर 1। केस नंबर 2, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। थर्ड केस इज योर नॉन रेसिडेंट। ठीक है, पहला पॉइंट है सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ फॉरेन एम्प्लॉयर ऑफ दुबई 9,68,000, यानी कि इंडिया में रिसीव हुई है। ठीक है, इंडिया में रिसीव हुई है कितना, 9,68,000। तो क्या होगा बेटा, इट विल बी टैक्सेबल इन ऑल द केसेस। चाहे अगर वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी टैक्सेबल होगी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी टैक्सेबल होगी, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तब भी टैक्सेबल होगी। रीजन क्या है, क्योंकि इंडिया के अंदर रिसीव किया है। शी हैज रिसीव दिस सैलरी इन इंडिया, राइट? क्लियर है? लुक, in this manner you will calculate the computation of total income of Miss Sophia for the assessment year 21-22 here. Particular resident and ordinary resident but not ordinary resident, and non-resident. Here, so point number 1, salary received in India from a former employer of Dubai. ठीक है, अगर वो सोफिया रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी टैक्सेबल है 9,68,000। अगर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब भी ये इनकम टैक्सेबल है उसके हाथ में। अगर वो नॉन रेसिडेंट होगी तो तब भी ये इनकम टैक्सेबल होगी, बिकॉज रीजन इज दैट this salary has received in India, that is why it is taxable in all the cases, right? Point number 2 guys, income from business in Hong Kong but control from China rupees 1,62,000, right? Income from business in Hong Kong but control from China, यानी कि बिजनेस कहाँ पे, चाइना में। हांगकांग इट इज इन चाइना, हांगकांग में ही बिजनेस है मिस सोफिया का, और कंट्रोल कहाँ से कर रही है मैडम, वहीं से ही कंट्रोल करती है। कितना प्रॉफिट होगा, कितनी इनकम हुई है, 1,62,000 रुपए की प्रॉफिट हुआ। सो लेट मी चेक हाउ इनकम फ्रॉम बिजनेस इन हांगकांग बट कंट्रोल फ्रॉम चाइना। तो इट विल बी, अगर वो, तो इफ दिस इनकम विल बी टैक्सेबल इफ शी इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट? अगर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो ये इनकम टैक्सेबल नहीं है, नॉन रेसिडेंट है तो तब भी ये इनकम टैक्सेबल नहीं, एज सिंपल एज दैट, राइट? पॉइंट नंबर थर्ड कहता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्या मतलब, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि रेंटल इनकम आ रही है इन इंडिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूके, यानी कि प्रॉपर्टीज की इंडिया में है, रिसीव कहाँ पे, और यूके में रिसीव कर रही है मिस सोफिया। तो कितना अमाउंट रिसीव कर रही है, शी इज रिसीविंग 2,79,000। क्या होना चाहिए, होगा बेटा क्या, इट विल बी टैक्सेबल इन ऑल थ्री केसेस, income from a property in India but received in UK, it will be taxable in all three cases, that is the 2,79,000, 2,79,000 and 2,79,000. ठीक है, point number 4, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश में प्रॉपर्टी है, उसकी रेंटल इनकम आ रही है मिस सोफिया की, बट रिसीव्ड इन पाकिस्तान में, यानी बांग्लादेश में कमाई, रेंटल इनकम आ रही है, और रिसीव कहाँ पे कर रही है मैडम, पाकिस्तान के अंदर। तो इंडिया के अंदर रिसीव, इंडिया में कमाई भी नहीं है और इंडिया में रिसीव भी नहीं की है, तो व्हाट विल बी हैपन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी in Bangladesh
बट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। कितना रिसीव आया था? 20 लाख रुपए आया था। तो 20 लाख इट विल बी टैक्सेबल इन द फर्स्ट केस, दैट इज द रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, बाकी के दो केसेस में ये टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रॉपर्टी बट रिसीव्ड इन इंडिया। कितना रेंटल इनकम आ रही है सोफिया की? कि बांग्लादेश में उसकी प्रॉपर्टी है बट रिसीव कहाँ पे कर रही है? इंडिया के अंदर रिसीव कर रही है 9,30,000, यानी कि 9,30,000 रुपए इंडिया के अंदर रिसीव कर रही है मैडम। तो क्या होगा बताइए? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश बट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। Income from property Bangladesh but received in India, it will be taxable in all three cases. I'm repeating once again. Point number 5, income from property in Bangladesh but received in India 9,30,000 रुपए, यानी कि सोफिया की बांग्लादेश में प्रॉपर्टी है लेकिन इंडिया के अंदर रिसीव कर रही है मैडम कितना? 9,30,000 रुपए। तो क्या होगा इसका? इसका होगा इट विल बी टैक्सेबल इन ऑल थ्री केसेस। इन ऑल थ्री केस, नंबर 1 रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी ये टैक्सेबल है उसके हाथ में। अगर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी ये टैक्सेबल है इनकम। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तब भी ये इनकम टैक्सेबल है उसके हाथ में। राइट, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, income from business in Nepal but control from India. What does it mean? It means कि जो मिस सोफिया का बिजनेस कहाँ पे है? नेपाल के अंदर, लेकिन डिसीजंस कहाँ से लिए जा रहे हैं? इंडिया से। 62 था, कितना बिजनेस इनकम है? 62,000 रुपए। तो it will be taxable in first two cases. Income from business in Nepal but control from India, it will be taxable in if she is a resident and ordinary resident, 62,000 रुपए टैक्सेबल। अगर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी टैक्सेबल है। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तब ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में बेटा क्या कहता है? इनकम रिसीव फ्रॉम अ कंपनी डिपॉजिट इन श्रीलंका। ठीक है, इनकम रिसीव फ्रॉम अ कंपनी डिपॉजिट इन श्रीलंका 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, यानी कि 1,86,000 का 1/3 आप कैलकुलेट कर लीजिए। 1 लाख। तो इनकम रिसीव फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट इन श्रीलंका 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया एंड 2/3 कहाँ पर रिसीव करी? आउटसाइड इंडिया। ठीक है, 1/3 अगर आपने कैलकुलेट किया तो दैट इज 62,000। 62,000 यानी कि वन 1/3। 1/3 किसका निकाला है बेटा? आपने निकाला 1,86,000 रुपए का। 1,86,000 का आपने तिहाई 1/3 आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा आपका बेटा आएगा 62,000 रुपए। ठीक है, रिसीव्ड इन इंडिया है तो 62,000 विल बी टैक्सेबल इन ऑल थ्री केसेस। अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी टैक्सेबल है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी टैक्सेबल है, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तब भी टैक्सेबल है। और 2/3 यानी कि 2/3 उसने आउटसाइड इंडिया रिसीव किया है, यानी कि 1,24,000 रुपए। तो 1,24,000 रुपए देन 2/3 यानी कि 1,24,000 विल बी टैक्सेबल in only first case, that is the resident and ordinary resident, and second और थर्ड केस में ये टैक्सेबल नहीं होगी। हमने इसको नील करके दिखाया है। राइट, पॉइंट नंबर 8, इनकम फ्रॉम बिजनेस कहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जापान फॉर द ईयर 2016 and 17 remitted in India during 2020 2001 12,40,000। 12,40,000। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन दिस पॉइंट। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जापान फॉर द ईयर 2016 16-17 इंडिया में भेजा गया है 20-21 में। ठीक है, यानी कि जो 16-17 में जो पैसा कमाया था, ठीक है, जो जापान में उसका बिजनेस है, वो कमाया हुआ पैसा 20-21 में भेज रही है मैडम। कितना भेज रही है? 12,40,000 रुपए। 12,40,000 रुपए। तो क्या होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस जापान फ्रॉम 2016-17 रेमिटेड टू इन इंडिया 20-21 में, तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल। आई एम रिपीटिंग वन, इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन ऑल थ्री केसेस। अगर वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब भी टैक्सेबल नहीं है, अगर वो रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब भी इस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, अगर वो यानी कि मिस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट है तब भी इस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि ये क्लियर है?
पॉइंट नंबर 9 कहता है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन गुजरात कंट्रोल फ्रॉम यूएसए 6,20,000 रुपए। व्हाट डज इट मीन गाइस? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन गुजरात, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन गुजरात कंट्रोल कहां से हो रहा है? यूएसए। कितना प्रॉफिट कमाया है मैडम ने? 6,20,000 रुपए का। यानी कि जो गुजरात में उसने बिजनेस सेटअप कर रखा है, लेकिन उसके डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं? यूएसए से। 6,20,000 रुपए इसको प्रॉफिट हुआ है इस बिजनेस इनकम से। नो, सो let us check. Profit from business in Gujarat control from USA. It will be taxable on all three cases, guys. रीजन, क्योंकि बिजनेस जो है ना, सेटअप जो है ना, इंडिया के अंदर सेटअप है, दैट इज व्हाई इट इज टैक्सेबल इन ऑल थ्री केसेस गाइस, राइट? इट विल बी टैक्सेबल इन ऑल। तो 6,20,000 रुपए इट विल बी टैक्सेबल। अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब भी 6,20,000 रुपए टैक्सेबल है। अगर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब भी ये टैक्सेबल है, इसे ये इनकम। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तब भी ये इनकम टैक्सेबल होगी मिस सोफिया के हाथ में, बिकॉज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस है ना, वो इंडिया के अंदर सेटअप है। ठीक है, ठीक है। वी हैव दिस 1 2 3 4 5 6 9 तक हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डू व्हाट, वी हैव टू डू द टोटल। हम टोटल करेंगे, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का टोटल करेंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का टोटल करेंगे, एंड नॉन रेसिडेंट के का टोटल करेंगे बेटा। टोटल जब हमने किया तो टोटल इनकम इंडियन इनकम तो कितना आया बेटा? ये कितना आ रहा है? रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में कितना आ रहा है? 5,20,700, यानी 5,20,700। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में कितना टैक्स, कितना टोटल इनकम आ रहा है? टोटल इनकम 29,21,000, यानी कि 29,21,000, राइट? नॉन रेसिडेंट में कितना आ रहा है? 29,21,000। तो दिस इज द टोटल इनकम, इंडियन इनकम लायबल टू टैक्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट? I'm trying my best, guys, for you. I'm trying my best for you to deliver my lecture, my knowledge for you, right? Because for delivering a lecture, a lot of energy is needed. It's not an easy task to deliver lecture for 1 hour or 2 hours. There is a lot of time, and a lot of energy is required to deliver lecture. So please appreciate my energy, my hard work also. Please try to understand. Please appreciate my work also, please. Now, question number next question is we are going to discuss. क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सबमिटेड बाय एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, करीब से 31 मार्च 2021। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पुणे, अमाउंट इज रिसीव्ड इन मॉरिशस 17,10,000 रुपए, राइट?
Now, I'm going to discuss the question number 2. The following information is submitted by X for the assessment year 21 22, that is the previous year 31 March 2021. Capital gain on sale of property situated in Pune. Amount is received in Mauritius 17,10,000 रुपए. Income from business in Pune controlled from Mauritius 21,50,000 रुपए. Income from business in Mauritius controlled from Pune. Amount received in Mauritius 15,90,000 रुपए. Next is your interest from deposit with an Indian company received in Mauritius rupees 2,30,000 रुपए. Royalty received from government of Maharashtra paid to him in Mauritius for projects situated in Mauritius, that is 3 lakh rupees. Determine the net income of X. क्या कहता है? Determine the net income of X for the assessment year 2021-2022 in the following cases. Case number 1. If X is a resident and ordinary resident in India, right? Case number 2. If X is a resident but not ordinary resident in India. Case number 3. If X is a non-resident in India. Okay. Now let us come to the solution. First of all, make a proper format in a copy. बड़ा बड़ा heading लिखें. Computation of total income. Computation of total income. Yeah. Heading लिखें बेटा. Computation of total income of Mr. X for the assessment year 21-22. Right. Heading dash लिखा आपने. लिखे particular nature of income, resident and ordinary resident, case 1. Resident not ordinary resident, case 2. Case 3 non-resident. ठीक है. Case 3 non-resident. पहला पॉइंट है बेटा. पहला पॉइंट क्या था? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ पुणे प्रॉपर्टी. कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ पुणे प्रॉपर्टीज. मिस्टर एक्स है, उसकी पुणे प्रॉपर्टी थी, तो उसको बेचने पर कैपिटल गेन हुआ. अब बताओ, अगर मिस्टर एक्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब इस इनकम का क्या असर होगा उस पर. अगर वो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब क्या होगा. अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा तो तब इस इनकम का क्या होगा. So it will be taxable in all three cases. It will be taxable in all three cases. Why? Because ये जो इनकम जो है ना, जो कैपिटल जो गेन हुआ है ना, वो इंडिया के अंदर हुआ है. जो इंडिया यानी पुणे इज इन इंडिया. इंडिया में जो प्रॉपर्टी बेची है पुणे में, बहुत से कैपिटल गेन हुआ है. दैट इज व्हाई इट इज एन इंडियन इनकम एंड इट विल बी टैक्सेबल इन ऑल थ्री केसेस गाइस. Point number 2. बिजनेस इनकम इन पुणे. बिजनेस इनकम इन पुणे साफ साफ सी बात है भैया, इंडिया के अंदर कमाई है, बाहर थोड़ी नहीं कमाई है. तो इट विल बी टैक्सेबल इन ऑल केसेस बिकॉज इट इज एन इंडियन इनकम. एज सिंपल एज दैट. राइट. तो 21,50,000 अगर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी ये इनकम टैक्सेबल है. अगर मिस्टर एक्स रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी ये इनकम टैक्सेबल है बिकॉज इट इज एन इंडियन इनकम. अगर वो नॉन रेसिडेंट है मिस्टर एक्स, अगर नॉन रेसिडेंट है तो ये बिजनेस इनकम इन पुणे में जो हुए ना उसको इनकम, तो दिस इनकम इज आल्सो बी टैक्सेबल इफ द मिस्टर एक्स इज अ नॉन रेसिडेंट आल्सो. एज सिंपल एज दैट बिकॉज इट इज एन इंडियन इनकम. इट इज एन इंडियन इनकम. नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस इनकम. थर्ड पॉइंट क्या है? बिजनेस इनकम इन मॉरिशस. बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम पुणे. बिजनेस है, जो मिस्टर एक्स है उनका जो बिजनेस है वो मॉरिशस में. बिजनेस लेकिन कंट्रोल कहां से किया जाता है? पुणे से किया जाता है. राइट. पुणे से किया जाता है. इट इज अ फॉरेन इनकम. बट अगर मिस्टर एक्स रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब ये इनकम टैक्सेबल है उसके हाथ में. अगर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी ये इनकम टैक्सेबल है. अगर मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट है तो ये इनकम टैक्सेबल उसके हाथ में नहीं होगी. राइट.
क्लियर है? इनकम टैक्स इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट. This concept is very easy, right? Next point, interest on deposit with an Indian company. Interest on deposit with an Indian company. So it is an Indian income and it will be taxable in all three cases. It will be taxable in all three cases, guys. चाहे अगर मिस्टर टैक्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी ये इनकम टैक्सेबल है, अगर वो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी ये इनकम टैक्सेबल है, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तब भी ये इनकम टैक्सेबल है, राइट? एज सिंपल एज दैट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर रॉयल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट. रॉयल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट. लास्ट पॉइंट था, कहता है कि रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र क्या इंडिया के अंदर है? मिस्टर एक्स को रॉयल्टी मिलती है. रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पेड टू हिम मॉरिशस फॉर प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन मॉरिशस. यानी कि जो प्रोजेक्ट उसका जो सिचुएटेड है मॉरिशस में, उसके लिए उसको रॉयल्टी मिलती है सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से मिलती है. कितना लाख रुपए मिलते हैं? 3 लाख रुपए मिलते हैं बेटा. तो 3 तो मिली तो इंडियन गवर्नमेंट से है ना, इंडिया से मिली है ना, तो it will be taxable. It will be taxable in all three cases. It will be taxable in all three cases because it is an Indian income. अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी ये इनकम टैक्सेबल है. अगर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब भी ये इनकम टैक्सेबल है उसके हाथ में. अगर मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट है तब भी ये इनकम टैक्सेबल है उसके हाथ में. Reason is that because it is an Indian income, as simple as that, right? Clear hai? I hope it is clear to everybody. Now what you will do, you will do the total of in all three cases में आप टोटल करें रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का एंड नॉन रेसिडेंट का आप टोटल करें. जब आपने टोटल किया तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का टोटल आया 59,80,000. रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का आया 59,80,000 और नॉन रेसिडेंट का आया 43,90,000 यानी 43,90,000 रुपए. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? टोटल इनकम, इंडियन इनकम लायबल टू टैक्स इन इंडिया, right? A lot of for delivering a lecture, a lot of energy, or a lot of dedication, a lot of patience is required. So it is my humble request to all of you, please appreciate my work, please motivate me, please appreciate my work, right? Teaching is not a easy task, you know. A lot of energy, you know, a lot of dedication, a lot of patience is required for delivering, you know, 1 or 1.5 hour lecture, right? Please appreciate my work also. It is my humble request to all of you, right? Now question number third. Question number third में क्या है? Now let us read question number third. कहता है X is a citizen of India. X is a citizen of India. X is a citizen of India. क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा.
Yeah, we were discussing about the question number third. Question number third. Let us read the question number third. Question number third. X is a citizen of India. From the information below, find out the net income of X. हमें क्या करना है? We have to find out the net income of X for the assessment year 21-22. On the assumption that X is a resident, on the assumption that X is a resident, an ordinary resident in India, or X is a resident but not ordinary resident in India. Case number third, X or X is a non-resident in India. तीनों cases में हमें we have to find out the net income of X for the assessment year 2021-2022 of Mr. X. X is a citizen of India. पहला पॉइंट है, मिस्टर एक्स बताते हैं क्या है, मिस्टर एक्स के बारे में क्या लिखा है. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कहता है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन पंजाब नेशनल बैंक बठिंडा, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में उसका खाता खुला हुआ है, यानी कि एफडी है. उसको उस एफडी पे उसको ब्याज मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट. 6 लाख रुपए का ब्याज मिलता है बेटा. ठीक है, देखते हैं क्या होगा इस तीनों. राइट, वी विल डिस्कस. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन नेपाल, entire amount is directly received in Nepal or remitted to Iran for investment purpose. However, no income is generated during the year out of this investment. Right? Agriculture operation are controlled from India by a team of professionals. Right? Point number third. थर्ड क्या क्या इन्होंने मिस्टर एक्स ने क्या बताया, सैलरी फ्रॉम यूएनओ रुपीज 18 लाख रुपीज मिली है इनको. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन चेन्नई, चेन्नई में इनका घर भी है, वहां से इनको क्या मिलता है, रेंटल इनकम मिलती है. रेंट, ठीक है, चेन्नई में घर है, वहां से इनको रेंटल इनकम आती है. रेंट इज रिसीव्ड इन श्रीलंका बट ऑन द नेक्स्ट डे इट इज रिमिटेड टू इंडिया. ठीक है, भेज दिया. कितना रुपए मिला रेंटल इनकम, 9,10,000 रुपए, 9,10,000 रुपीज. राइट, आगे बता रहे हैं पेंशन रिसीव्ड इन लंदन. pension received in London service pension received in London service was rendered in India with a foreign company, that is 80,000. Right, now come to the solution. Computation of income of X for the assessment year 21-22. ठीक है, आपने लिखा computation of income of X for the assessment year 2021-2022. Right, then particular resident, ordinary resident, case number 1. Case 2, resident not ordinary resident. Case 3, नॉन रेसिडेंट. ठीक है, पहला पॉइंट है बैंक इंटरेस्ट. ठीक है, पहला पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन पंजाब नेशनल बैंक बठिंडा में जो उनकी एफडी है, वहां से उनको इंटरेस्ट मिला है 6 लाख रुपए का. तो ये तो बड़ा साफ साफ है, इट इज एन इंडियन इनकम. इट विल बी टैक्सेबल इन ऑल 3 केसेस. ठीक है, इट विल बी टैक्सेबल इन ऑल 3 केसेस. ठीक है, तो इट विल बी टैक्सेबल. यहाँ पे लिखा बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पे रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आपका 6 लाख रुपए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी केस में आपका 6 लाख रुपए, एंड नॉन रेसिडेंट में आ जाएगा आपका 6 लाख रुपए. ठीक है, क्लियर है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन नेपाल, entire amount is directly received in Nepal on remitted to Iran for investment purpose. However, no income is generated during the year out of this investment. Agriculture operation controlled from India by team of professionals. ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम इन नेपाल, तो इट विल बी टैक्सेबल इन फर्स्ट 2 केसेस. 12 लाख रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में. अगर मिस्टर एक्स रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो ये इस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, अगर मिस्टर एक्स रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब भी 12 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा. अगर मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट है तब इस इनकम पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा. ठीक है, समझ में आई बात. सैलरी फ्रॉम यूएनओ रुपीज 18 लाख.
Point number third, we were discussing, guys. Point number third, salary from UNO, रुपीज 18 लाख रुपए उसको सैलरी मिलती है यूएनओ से मिस्टर एक्स को। तो क्या होगा बेटा, जो सैलरी फ्रॉम यूएनओ इज नॉट टैक्सेबल इन एनी कंट्री। Note down in a copy, salary from UNO is not taxable in any country, right? Now, the fourth point is all income from house property situated in Chennai. Rent is received in Sri Lanka, but on the next day it is remitted to India. 9,10,000 रुपए। तो ये क्या होगा? It will be taxable in all three cases. अगर मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी इस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर मिस्टर एक्स रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी इस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट है तब भी इस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, राइट? क्लियर है? पॉइंट नंबर 5, पेंशन रिसीव्ड इन लंडन, सर्विस was rendered in India with a foreign company, 80,000 rupees, right? So it will be taxable in all three cases. अगर मिस्टर एक्स रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी इस इनकम पेंशन पे टैक्स देना पड़ेगा। इट विल बी टैक्सेबल, इस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर मिस्टर एक्स रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तब भी इस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट है तब भी इस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, पेंशन वाली इनकम पे, राइट? नाउ इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क। Now what you will do the total resident ordinary resident का total करेंगे, तो that will be 27,90,000। रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का इसमें भी आप टोटल करेंगे 27,90,000 रुपये टोटल आएगा। और नॉन रेसिडेंट के केस में आपका टोटल आएगा बेटा 15,90,000 रुपये, राइट? 15,90,000 रुपये। रिपीटिंग वन सेकेंड, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का टोटल आएगा 27,90,000 रुपये का। रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का बेटा टोटल आएगा 27,90,000। नॉन रेसिडेंट का टोटल आएगा 15,90,000, यानी कि 15,90,000 रुपये, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। Delivering a lecture, a lot of energy are required. Please always cooperate. Please motivate me. Please appreciate my work also. Guys, remember these words in your life. सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें, राइट? रिपीटिंग वन सेकेंड, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। Knowledge will give you the power, but character will give you respect. So never spoil your character, right? Guys, confidence and hard work is the best medicines to kill the disease called failure. It will make you successful person in your life. Develop self-confidence, do a lot of hard work, right? Confidence and hard work is very, very, very important, right? Confidence and hard work is the best medicines to kill the disease called failure, right? It will make you a successful person in your life. And please, whatever the goals you are having in your life, never give up your dreams. जो आपके सपने हैं, right? So never give up your dreams.
To succeed in your mission, you must have a single-minded devotion to your goal. What does it mean? It means whatever the goals you are having, note down in your copy. Note down in your copy and start working on that. And you must have a single, you must have a single-minded devotion, right? To succeed in your mission, you must have a single-minded devotion to your goal. If four things are followed, having a great aim, acquiring knowledge, hard work, perseverance, then anything can be achieved. Right. Thank you very much for listening my lecture very patiently, very actively. Thank you all. God bless you all. And please appreciate my work. Thank you all. God bless you. Thank you.